Hello students, welcome in the chemistry class. Today we will discuss about the laws of chemical combinations. These are law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. So we will discuss about these laws one by one. What are these and what is their statements? How can these govern the formation of chemical compounds? Why the need for laws of chemical combination? लॉ हमें क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? We know that elements are pure form of matter and these may or may not exist free in nature. So compounds are formed by combination of two or more elements in fixed ratio, and when compounds are formed, these are different from properties from the constituent elements, combining elements. Combination of the elements is governed by some rules, and these are known as the laws of chemical combinations. There are mainly 4 laws of combinations in your syllabus, and one more is law of reciprocal combination. First of all, we will discuss about the law of conservation of mass. What is that? This law was given by Antoine Lavoisier in the year 1789. And it states that matter can neither be created nor destroyed, or in other words, total mass or sum of the mass of the combining reactants is equal to total mass of the products formed after the reaction. यानी कि रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद टोटल मास सेम रहता है. एग्जाम्पल की फॉर्म में सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टू गिव NaCl, and total mass of Na is 46, chlorine 71 gram, and mass formed for NaCl is 117 gram, and both of these are equal before reaction as well as after reaction. Example number 2, silver nitrate and sodium chloride react to form sodium nitrate and silver chloride, and total mass here before reaction and after reaction are same, and these are equal to 228.5 gram on both the sides. Second law is law of definite proportion, and this law was given by Joseph Proust. According to this law, a chemical compound is always found to be made up of same element combined together in the fixed ratio by mass, or the elements, whether these are obtained from any source, these are also combining with constant ratio by mass. वाटर, पानी फॉर एग्जांपल वाटर कहीं से भी मिले लेकिन उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए. इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं प्योर वाटर H2O. हमें ये किसी पॉन्ड, सी, रिवर कहीं से मिल सकता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से भी बना सकते हैं, लेकिन इन ईच केस देयर इज ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, एज H रेशियो O, H atomic mass 2, oxygen 16, and ratio is 1:8. In second case, carbon dioxide is formed by the carbon and oxygen, and carbon is having mass 12, oxygen is having 32, and again in these cases the mass ratio is 3:8. So कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से मिले, किसी भी सोर्स से बनाया जाए, ईच कंडीशन में जो टोटल रेशियो होता है बाय मास वो हमेशा कांस्टेंट ही बना रहता है. थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. It was given by Dalton in year 1803, and according to this law, when two elements combine and form two or more compounds, so these always the element which has fixed mass, it combines with other elements with different masses. So these different masses have simple ratio with each other. For example, carbon and oxygen combine
one time as carbon monoxide, second time and as carbon dioxide, and the ratio of mass of carbon is always 16, but that of 12 gram, but that of oxygen is 16 and 32 respectively, and that is in the ratio of 1:2. तो ऑक्सीजन जो है कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ 1:2 के रेशियो में कंबाइन करती है CO and CO2 में. Gay-Lussac's law of the constant volume, gaseous volume, and it was given by as the name Gay-Lussac in 1808. And according to it, when gases combine in a chemical reaction, they do so by volume. वॉल्यूम वाइज जब रिएक्शन करती हैं तो उनमें आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, साथ ही साथ इनका रेशियो प्रोडक्ट के साथ भी होल नंबर रेशियो में रहता है अगर इफ both the reactant and products are gases and these are present at the same temperature and pressure. अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंसंट्रेशन की कंडीशन सेम है तो गैस मोलिक्यूल्स, गैस के वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स में, रिएक्टेंट के वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स में एक फिक्स्ड रेशियो रहता है. और ये जो लॉ है दैट इज द अदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वेयर the law of definite proportion reactant combined by mass. Example. For example, in combination of hydrogen chlorine, one volume of hydrogen and one volume of chlorine always combine to form 2 volume of hydrogen chloride, and hydrogen plus chlorine gives 2 HCl. So if hydrogen is present in one volume, chlorine is also present in one volume, but HCl will be in 2 volume. And ratio of volume of H2 and chlorine and HCl is 1:2. That is a whole number ratio with each other. Last, Avogadro's law. Avogadro proposed this law in the year of 1811, and according to it, under the same condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain an equal number of molecules. अर्थात सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता है. सपोज 2 लीटर हाइड्रोजन है और 2 लीटर ऑक्सीजन है, दोनों में ही मॉलिक्यूल्स की संख्या हमेशा बराबर रहेगी इफ बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, hydrogen and chlorine reacts to form 2 HCl. इसकी हेल्प से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, और उसको हम करने के लिए एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं, n वॉल्यूम हाइड्रोजन n वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो 2n वॉल्यूम HCl बनते हैं. जब एक मॉलिक्यूल H2 का होगा तो एक मॉलिक्यूल क्लोरीन होगा और बनेंगे 2 मॉलिक्यूल HCl, यानी कि 1/2 molecule H2, half molecule chlorine and 1 molecule of HCl. So HCl is made up of 1 H and 1 Cl, and atomicity of hydrogen and chlorine is 2, and that is the Avogadro's law. Thank you for today.